Well, students, good evening to all of you. So, guys, today we will discuss the paper 2. This is the exam preparation class of paper 2, semester 1. The name of the paper is History and Political Economy of Education. Right? So, already I have sent you the notes. Okay. So, today we are discussing the whole PDF file, whole notes which I have sent to you. So, basically, you know that in our exam preparation class, we discuss the last year paper because 90% last year paper repeats with some of the changes. Okay, guys. So today we will also discuss the last year paper as well as our syllabus also, right? So first see your syllabus. This is your syllabus: history and political economy of educations. Okay, so all the four papers you have got, all the notes of four papers you have got, and in every notes on a very first page syllabus is given, number one, and second page last year paper is given, and after that there is a solved paper as well as notes which is covering your whole syllabus, right, guys? So see your all the four PDF file. You can take the printout of your PDF file, right? So that start learning from today onwards. Okay. So today we are discussing the history and political economy of educations, right? So guys, first of all, you have to understand, okay, what are the content of this paper, right? I always say that based on my experience, to know the syllabus is very much important, right? Whatever you want to start, I request to all of you, I advise to all of you, prepare your syllabus first. Your syllabus should be on your fingertips. Okay. What are the names of the four paper? What is the syllabus of the four paper? When? Because it is a one-page syllabus. If you know the syllabus, all the four papers, you will come to know that there is a lot of interlinked, between many topics, right? And if you will learn one after the other by so then you will not come to know that okay, which part how you have to prepare. So whenever you have to start your study, first see your syllabus, what the syllabus is demanding. Okay, which part is the important? Okay, what I have to learn, what I have to write on the answer sheet, because this is a exam preparation class. So I'm also discussing the important tips with you. So guys, try practice at your home, right? By writing. In the examinations, 40 sheets come, right? 20 sheets for one sheet having the two part, left side and right side. So there are total 40 sheets. So you are supposed to fill the 40 sheets within a 3 hours. And based on my experience, I share some of things with you so that it would help you. Because some students comes after the exam, they know that they say to us, okay sir, actually we know the answer, but due to the lack of time we miss the whole question, long question. And you know that long questions comes of the 14 marks. So guys, now you have got a enough material. Trust me, enough material you have got. Last year solved paper you have got, right? All the four papers last year, okay, with this solved you have got notes of all the syllabus, right? Now stop collecting the notes, right? Start learning, and the most important part, writing on the sheets. Do practice at home by yourself, in fact. Okay, then you will come to know that, right? Because there is a difference between the learning part and the writing part. Because whatever we are learning, it will go into our mind later on. Whenever we have to put these things on the paper, we get confused, right? So writing is the most important part. Most important part. Even you are going to become teacher, right? Writing is must, guys. Even when you start writing now, it will automatically improve your English also and your vocabulary also.
and you will come to know the concept of that. So the most important part in B.Ed or M.Ed exam is the writing. So start writing, okay? See the last year questions paper and, solving that on a, 40 pages, and see the time within a 3 hours you are able to finish the exam or not, right? So we are discussing the paper 2, history and political economy of education. So guys, you can see that this is a very easy paper and very informative paper. Okay. अब what is the heading of paper? क्या है heading? History and political economy of education means we have to talk about the education, right? In the history means, what was the education during the Vedic period? What was the education during the Mughal period? And what is the modern education? Nothing else. इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, right? Try to understand, conceptual knowledge is must. Okay, you should have the knowledge of concept, right? So basically, what you have to learn whenever we talk about the educational implication. Okay, what is the meaning of educational implication? Abhi see that, unit 1 में first is written na Vedic. ये देखो, okay, whatever I have selected, ये देखिए, education in the, ये देखो, I have selected ना, what is written? Education is the India during Vedic period, Buddhist period, and medieval period. Okay. So basically, you get confused here. You don't know what you have to study. Am I right now? You don't know, no? What you have to study actually in the Vedic period, actually in the Buddhist period, or actually in the medieval period, what you have to learn. So that's why, guys, this exam preparation class is important for you. Okay. So in a Vedic period, Buddhist period, or even in the during the Mughal period, what is the modern period of education? So guys, you have to learn the 3 things only, right? Either in the Vedic period, Buddhist period, medieval period. What are the 3 things? So you can note that number first is aims of education. Number second is curriculum. Number third is method of teaching, nothing else. Okay. So for example, questions of a Vedic period comes. Okay. Whatever the question comes during the Vedic. Okay. If examiner asks, write the educational implications, write the education system during the Vedic period, during the Buddhist period, during the medieval period. So you always have the 3 things in the mind. Okay. What you have to write? Number 1, you have to write aims of education. Number 2, you have to write curriculum. Number 3, you have to write method of teaching. Okay. Means what was aims of education during the Vedic period? What was curriculum? Curriculum means syllabus plus co-curricular activity during the Vedic period. And what was the method of teaching during the Vedic period? Okay. अब उसके बाद आ जाओ, ये देखो सेकंड में एजुकेशन इज द ब्रिटिश पीरियड. ओके. सो ब्रिटिश पीरियड में ये देखो, ये तो हम ऑलवेज पढ़ते आए हैं हम. Even we have covered in the B.Ed, even we have covered in the other exams also, right? Bentinck proclamations क्या थी? मैकॉले मिनट क्या था? वुड डिस्पैच कमीशन क्या था 1854? और लॉर्ड कर्जन्स की एजुकेशन पॉलिसी क्या थी? ये तो बड़ा इजी है, राइट? अब उसके बाद आ जाओ यूनिट सेकंड. यूनिट सेकंड इज अगेन इजी. ओके. many times we have learned these all 4 commission. Indian University Commission 1902, Sadler Commission, हरतोग कमेटी, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन गांधी जी की स्कीम है जिसको नई तालीम बोलते हैं. वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इट इज कॉल्ड द बेसिक एजुकेशन, इट इज कॉल्ड द नई तालीम एजुकेशन. इट वाज गिवन बाय द गांधी जी 1937. और उसके बाद ये देखो, ये थर्ड पार्ट है ना. थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट आ गया. अब कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट? तो थर्ड पार्ट में इट इज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन कमीशन प्री इंडिपेंडेंस, और
In the fourth part, it is talking about the Education Commission after independence. यूनिवर्सिटी कमीशन आ गया 1948-49, राइट? ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए ऑरली, एक एक लाइन के क्वेश्चन, एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है. ओके, यू कैन राइट इन ए नंबर ऑफ पेजेस. ओके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज गिवन बाय, किसने दिया था? आई थिंक यू नो राधा कृष्णन ने दिया था, राधा कृष्ण मिशन ने, एस राधा कृष्ण, राइट? 1952-53 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसने दिया था? मुदालियर ने दिया था, राइट? जो थे, ही वाज द वीसी ऑफ द मैड्रास यूनिवर्सिटी. मुडालियर कमीशन भी बोलते हैं इसको. अब यू नो होगा क्या, क्वेश्चंस तो यही है, सिलेबस तो यही है, लास्ट ईयर के पेपर भी वही है, तो एग्जामिनर क्या करेगा? समटाइम एग्जामिनर विल राइट दैट, राइट द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53. sometime he will write, explain the मुडालियर कमीशन. तो गाइस, इफ यू नो दैट ना, तभी आपको पता लगेगा मुडालियर कमीशन का मतलब ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है. You know, 3-4 years back, you know what happened? You know, our one student, he left a one question, this questions, you know, it is written na Indian Education Commission. अब you know, Indian Education Commission, वहां questions नहीं आया. The questions came, explain in detail Kothari Commission of Education. So he left that questions because you know, he only उसने सिर्फ, he knows that Indian Education Commission 1964-66. So basically guys, ये commission, it was given by the Dr. D.S. Kothari. Okay, so from the syllabus, that's why ना I say that to learn the syllabus is the important thing. Syllabus को अपने सामने रखो और write the important things. Okay, then start learning. So what is the problem? You start learning and you searching the internet. Okay, no need of that, right? Ab now start learning, start understanding, see my all the videos, everything you have got it. Okay, and this is the exam preparation class. This is the most important. Before starting that, na, see my this class. Okay, so you know whole of the paper you will learn within a 2 days by investing only 2-3 hours in a day. Right? So Indian Education Commission was given by the Dr. D.S. Kothari. Okay, National Policy of Education 1968, 86 और 92. आपको पता होना चाहिए कि 1992 थी, वो क्या थी? That was the revised policy. Okay, National Policy on Education. ये जनरल है, जनरल इंफॉर्मेशन है, and you should know that. अभी now you know which new education policy we have got in which year? 2020 new education policy. Okay, you should have the knowledge. We have got the education policy, matlab it is unfortunate. Okay, we have got the education policy after 14 or 23 is going on, after 37 years. This is the reason na, there is a lot of problems in our education system. We are very back in the education system and we have the lack of skilled teachers, right? Due to the skilled teachers, we are on this stage, and due to the government policies also, because after 37 years, we are getting the education policy, and we are putting up in the era of a, you know, technology and science, where everything is changing after, you know, 1 month, you know, even after 1 day, right guys? तो ये देखो, ये this is the most important. Okay, to know the syllabus. अब थर्ड में आप देखो, एजुकेशन इन रिलेशंस टू फ्रीडम, वैल्यू एंड ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी. तो ये सारा का सारा इट इज रिलेटेड विद यू नो एजुकेशंस. ओके, व्हाट वाज द यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन रिलेशंस टू एजुकेशन? ऑरली आपको पता होना चाहिए. बीइंग टीचर, बीइंग प्रिंसिपल, यू आर गोइंग टू बिकम. Okay, for example, Article 45 talks about the free and compulsory educations. Article 21, Article 30. You know, there are a lot of, you know, constitutional provisions. You should be aware of that. अब ये देखो 6 आ गया. Education in relations to national values as enshrined in the Indian Constitution. Nationalism and national integration.
यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो नेचुरली सी बात है, ये देखो नेचुरल इंटेग्रेशन है तो नेशनलिज्म एक ही बात है। ओके, इफ यू विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन यू आर डेवलपिंग द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑटोमेटिकली इट वुड कम। ओके, एंड यू नो लास्ट में आप देखो सेवंथ पार्ट है, सेवंथ और एट्थ पार्ट, एजुकेशन एज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, हाउ द एजुकेशन इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। और ये देखो फिर, ये देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बड़ा। एजुकेशन एज रिलेटेड टू सोशली एंड इकोनॉमी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी with special reference to SC, ST, women and rural population, nothing else. अब ये दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। अब here मतलब what you have to learn, here you have to learn, you know, how the education is provided to the minorities. Okay, or you know what is the status of एजुकेशन टू माइनॉरिटीज, बस यही है। ये माइनॉरिटीज में देखो शेड्यूल कास्ट भी आ गया, ओके, शेड्यूल ट्राइब्स आल्सो, विमेन, रूरल पॉपुलेशन, ओके, एंड वन मोर थिंग, डिसएडवांटेज सेक्शंस, यही होते हैं डिसएडवांटेज सेक्शंस। ओके, अब लास्ट में एजुकेशन एज रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यू नो एवरीबॉडी, आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी नो अबाउट इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एवरीबॉडी नो दैट, यू ऑल नो दैट, राइट? If I ask from you, you will say that कि sir, equality means there should be a equal distribution of resources, everything among men and women, है ना? Among male and female, you know, all the, irrespective of any religion or any disadvantaged sections. But you are not aware of the equity. Equity is the most important. Equity means, you know, how much help you need that to come on this stage where you can get the equal opportunity. Basically, equity leads to the equality. Equity leads to the equality. So being teacher, being principal, you have to work on equity. Okay. So why the equality of educational opportunity is not going to be successful due to the equity problem? So guys, conceptual knowledge, I'm sure that, okay, see your syllabus, clear the concept in your mind, and I'm sure that you can write even, you know, so many pages. Okay, when the concept is not clear, okay, then you know, you stop. Okay, your hand hesitates. Okay, if you know the concept, your hand will not hesitate by writing your answer sheet up to the 3 hours. This is the most important. अब लास्ट में देखो क्या है, लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये मैंने आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मैंने आपको टीचर एजुकेशन में भी ये नोट्स दिए हुए हैं, ये वाले नोट्स ना, दिस वन, ओके, और दिस वन you can check in the your paper, you know, one of your paper, semester 1 paper. First is your educational psychology, second is this, third is educational studies. Yes, educational studies में दिए हुए हैं। Your third paper is the educational studies ना, उसमें ये है global perspective of education, okay, education to the disadvantaged section, तो ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट्स इन 21st सेंचुरी ऑफ एजुकेशन, राइट? तो दिस इज योर सिलेबस गाइस, सिलेबस, टू नो द सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब नाउ नेक्स्ट वी मूव टू दी, यू नो, लास्ट ईयर पेपर, ये आपका लास्ट ईयर पेपर। ओके, तो ये देखो वही क्वेश्चंस आए हुए हैं, 70 मार्क्स का पेपर है आपका, राइट? तो ये देखो पहला आ गया मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड, है ना? फिर आ गया सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेटलर कमीशन, फिर एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म, एजुकेशन फॉर रूरल पॉपुलेशन, ओके, फिर आ गया डिस्कस एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड इन अवर कंट्री। ओके, मैंने अभी आपको समझाया है ना, राइट? तो अगर ऐसा क्वेश्चंस आए
कि you have to explain the educations in the Vedic period, Mughal period, medieval period. So what you have to write? You have to write the three things. Number one, aims of education. Number second, curriculum. Number third is method of teaching. Okay. फिर ये आ गया मैकॉले मिनट्स, इसको डिटेल में बताना है। ये देखो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आ गई गांधी जी की, बड़ी इजी है। उससे भी इजी आ गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। किसने दिया था ये, भी बताया मैंने, मुडालियर ने, राइट, हु वाज द वीसी ऑफ मैड्रास यूनिवर्सिटी। Explains the national values as enshrined in the Indian Constitution along with their educational implications. 7 देखो ये जनरल क्वेश्चंस आ गया गाइस, ये तो जनरल टॉपिक है, मतलब एवरीबॉडी कैन राइट इट। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन इट डेवलप्ड इन स्कूल्स, तो हाउ यू डेवलप द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स by creating the values of the brotherhood. Okay, मतलब you can send your students to the another schools to the other country, है ना, in order to so that they can jointly they can do the work, any of the project. From that way na we can develop the international understanding. अब now in the today's world the whole world is like a village. Okay, तो हमें we have to train our student up to the global level, right? Means we don't have to train our student up to the Indian education's level, even beyond we have to work, right? So this is the important thing guys. अभी आप ये देख लो इन फॉरेन कंट्रीज ना, मतलब दे गिव मोर एंड मोर फोकस ऑन द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज. Even India may be, there are many schools they have opened, they are giving emphasis on the co-curricular, extra co-curricular activities, है ना. Even abhi now in India we always say that convent schools are better, but many schools have also opened. Even the convent schools also, they are also working on the extra co-curricular activities, because in the past convent schools are known for the academic, है ना, for the you can say that academic level के ऊपर तो convent schools are the best. But nowadays the scenario has changed. Okay, many parents they are demanding that their children they also get the curricular activities, co-curricular activities when they pass out of the school. Okay, there should be a harmonious development, not only the development on the academic side. Okay, so what basically we are doing that, matlab we are feeding the information in the mind of the student. We don't have to make the robot to the student. Okay, there should be a harmonious development. और आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, अब आप ये अंदाजा लगाओ. ओके, तो व्हाई आर यू लर्निंग दिस सिलेबस, तो पास तो चलो हो जाओगे आप, पर आप प्लीज थिंक दैट ना कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ योर सिलेबस. And by getting these contents in your mind, you have to go for a job and you have to become a teacher, principal. Okay, and these things you have to develop among the students, right? So this is the most important, right? Well, fourth में देखो last में discuss the concept of equality of educational opportunities. ये देखो what measures can be taken from bringing the equality of educational opportunities, अभी हमने discuss किया. और write a short note on education as related to economic growth and investment and education for women, right? तो guys ये सारे के सारे अभी हम, ठीक है, थोड़ा जल्दी swiftly we discuss all the questions, right guys? So now I open the second PDF file which I have already sent to you, right? Okay, we will discuss in brief so that concept should be clear, and rest of the part you have to learn, right guys? तो सारे क्वेश्चंस we discuss, हाँ. तो I start with the main recommendations of the Buddhist period. ये देखो side by side ना we open the last year paper. ये आ गया ना लास्ट ईयर पेपर. ये देखो पहले ना बुद्धिस्ट पीरियड. ओके, तो वट एवर वी आर कवरिंग उसको हम
अंडरलाइन कर रहे हैं एंड विद द रेड कलर. ओके, मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड. अब ये देखो बुद्धिस्ट पीरियड में क्या था. बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक लाइफ. Okay, in this period, in the Buddhist education, the education is based on the moral, mental, physical development of the student. What was the feature and recommendations of the Buddhist system of education? ये देखो, on that time, the aim of education is to attain nirvana, and the entire system is set up accordingly. Okay, the second is the kind of education is mainly attained at maths, viras and monasteries, and the system is managed by monks. Monks होते थे ना, वो दे ये सब चीजें करवाते थे. ये मठ है, मैथ्स नहीं, सॉरी, मठ. ओके, एजुकेशन इज मेनली अटेन्ड एट मठ, vihars and monasteries. Okay, third is the education system of Buddhist period. Okay, the third point is that the education system has a broad and positive vision towards teaching. Hence, students belonging to the all caste, religion and races are welcome with equality in Buddhist education system. अब आप ये देखो guys. Okay, here I stop for a for 5-10 seconds. Up today now we are talking about the equality of education. And we are boasting that we are putting up into the modern education. आज से देखो हजारों साल पहले this period of education में that was a equality of education. Students from all the castes, religions, races are welcomed. Guys, we should be proud of Indians. हमारा जो education system है, this is the one and the old system of education, right? बहुत बढ़िया सिस्टम था हमारा एजुकेशन का सिस्टम. इवन मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स है ना, दे रूल्ड ऑन अस एंड दे हैव वेनिश्ड आवर एजुकेशन सिस्टम्स. ओके, ये मैकॉले मिनट्स हैं, राइट, ये जो लॉर्ड बेंटिक वगैरह, ये जो गवर्नर जनरल्स आए, ओके, तो दे हैव even finished, they have vanished our education system. Otherwise we were rich in our education system, right? ये देखो, secular education is given importance along with the religious educations. Fifth देखो क्या था on that time. Fifth point, during the Buddhist period, a harmonious teacher student relationship is maintained. Teacher gives equal respect to the student and receives the same affection from the student. This helps in establishing a disciplined life. Basic essentials of life like spinning, weaving, drawing, medicine, etc. are a part of the curriculum. तो ये सारा का सारा बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन है. ओके, फिर था सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ सेडलर कमीशन इन 1917. तो आपको पता होना चाहिए ये सेडलर कमीशन आया था 1917 में in order to improve the higher education, right? So ये देखो, in 1917 the government of India appointed a commissions to study and report the problems of the Calcutta University. Dr. M.E. Sadler, vice chancellor of the university, Leeds was appointed its chairman. Okay, तो ये देखो, ये अंडरलाइन किया हुआ मैंने इंपॉर्टेंट लाइन. The Sadler commissions reviewed the entire field from school education to university education. The Sadler educations held the view that the improvement of the secondary education was a necessary condition for the improvement of the university education system. Got it? So इसलिए बना था Sadler Education Commissions. ये इसके थोड़े पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ लेना, राइट? उसके बाद आ गया आपका एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म. तो सबसे पहली कोटेशंस है गिवन बाय द नेल्सन मंडेला. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, राइट? सो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब है इट इज ए बेसिकली ए मॉडर्न मूवमेंट. ओके, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये देखिए, द वेव ऑफ नेशनलिज्म केम विद द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. For some, nationalism is to love and praise our country unconditionally,
while for some it is a way to keep reforming the past deed for the better future. This is a nationalism, right? बाकी बड़ा अच्छा नोट्स आप उसके ऊपर पढ़ सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन वाज एजुकेशन फॉर रूरल पॉपुलेशन. ओके, तो ये देखो ये पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं. रूरल पॉपुलेशन, रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव इन इंडिया हैज द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव. क्या क्या है ये देखिए ये सारे. To provide free and accessible educations to all rural children. Next, aims at reducing disparity in rural India by educating all. Next, to develop rural economy by strengthening rural education. Next, guiding and supporting children for getting higher education. Next, promoting a conducive and stress-free environment for students in all schools and adoptions a new method of teaching and assessment system. तो ये सारा का सारा एजुकेशन फॉर रूरल पॉपुलेशंस है, राइट? ये चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर उसके वो मेजर्स हैं, राइट? क्या क्या मेजर्स हैं उसको इंप्रूव करने के लिए. ओके, तो आप ये देखिए इधर क्वेश्चंस में रिकमेंडेशन ऑफ अ बुद्धिस्ट पीरियड हो गया हमारा, ये लास्ट ईयर पेपर है, राइट? सेटलर कमीशंस, नेशनलिज्म और ये रूरल पॉपुलेशंस, ठीक है ना? ये चारों हमने डिस्कस कर लिए हैं लास्ट ईयर पेपर. ओके, तो इन चारों को मैंने रेड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया. नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट सेकंड क्वेश्चंस. Discuss the educations during the Vedic period in our country. I have told you now what you have to learn. Three things. One is aim of education, curriculum and method of teaching. Okay, notes भी मेरे ऐसे ही तैयार हैं. ये देखो, पहले तो वैदिक पीरियड हल्का सा डिफाइन करो. ओके, कि वैदिक पीरियड क्या था. ये देखो वैदिक पीरियड क्या था, राइट? फिर उसके फीचर्स बताओ. व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राइट? फिर उसके बाद ये देखो एम्स आ गया, एम्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड. फिर ये देखो मेथड्स आ गया, मेथड इन द वैदिक पीरियड. करिकुलम कहां गया? करिकुलम भी यहीं पे होगा, देख लो, ठीक है? थ्री थिंग्स आपको यू हैव टू डिफाइन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? यहीं पे होगा. ये रहा वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राइट? ये करिकुलम है, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन. ओके, वैदिक सिस्टम के अंदर. तो इसको ब्रीफ में हम वी अंडरस्टैंड व्हाट वाज द वैदिक पीरियड इन आवर कंट्री. ओके, वैदिक पीरियड बेसिकली Indian civilizations and culture are one of the oldest civilizations and culture in the world. However, all except that Indian Ved, ये चार वेद आपको पता होने चाहिए, ठीक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. ओके, ये फोर वेद्स दैट आर वेरी ओल्ड. ओके, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ वर्ल्ड है. तो वैदिक पीरियड बेसिकली कंसीडर्ड एज ए 1500 BC टू 600 BC, राइट? और ये इसको Vedic system of education we call that, sometime we call that the Hindu system of education because it was developed by the Hindus. Okay, but mostly we call it the Vedic system of education. What was the main features of the Vedic system of education? Administrations and finance of education क्या था देखो, right? Vedic system of education, it was a free from state control. ये point बड़ा important है, देखो. एजुकेशन ना, इसका मीनिंग क्या है? आई अंडरस्टैंड, ओके, विदाउट गोइंग हियर. एजुकेशन वाज नॉट इन द हैंड ऑफ द स्टेट और सेंटर. टुडे एजुकेशन इट इज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट. ओके, बट ड्यूरिंग द वैदिक ना, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुरुज. ओके, मतलब दे हैव द गुरुकुल. ओके, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन सिस्टम और दे प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. गाइस आप देखो वैदिक पीरियड में हाउ मच वैदिक पीरियड इज ओल्ड. यहां पे लिखा था, ये देखो 1500 BC टू 600 BC, है ना? ये कितना हुआ? ऑलमोस्ट 3000, है ना? 2000 BC वी कॉल दैट, है ना? जीसस से. तो ये तकरीबन 3000 BC देख लो आप, है ना? ड्यूरिंग दैट टाइम. तो क्या था?
आज से 2,500-3,000 पहले, या वी से दैट 600 BC to 1500 BC में the education system was, free education, giving the education free. Today we are charging. ये देखो, it was written, education during the Vedic period was completely free. The gurus themselves arrange for housing and boarding of the student. इवन बच्चों का लॉजिंग बोर्डिंग सारा ही अरेंज वो करते थे, वही टीचर्स. द स्टूडेंट ऑफ कोर्स यूज्ड टू पे सम गुरु दक्षिणा टू देयर टीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल पोजीशन, राइट. तो नोबडी वाज बाउंड. आज की डेट में तो आप ये देखिए, इफ एनी ऑफ द पेरेंट हैविंग द लेस मनी ना, ही कैन नॉट पुट हिज डॉटर और सन इनटू ए गुड स्कूल एजुकेशन, गुड स्कूल. तो वही सिस्टम नहीं बढ़िया था. आप ये देखिए, सोर्सेज ऑफ इनकम. अब उनका जो वो गुरुज थे, है ना, जो गुरुज थे, बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल ना फॉर एजुकेशन सिस्टम. तो व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम? द सोर्स ऑफ इनकम वाज, गुरु दक्षिणा, एंड समटाइम द किंग एम्परर, है ना, ऑफ दैट, ही गिव्स सम, ये देखो, ये सम लैंड, एनिमल, ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड मनी टू दीज गुरुकुल्स. तो ये सारा का सारा था. अब ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, ये अब करिकुलम आ गया. ओके, फिर मेथड ऑफ टीचिंग आएंगे. ओके, क्या था प्राइमरी एजुकेशन में, उनका रिचुअल क्या था वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में? द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन द वैदिक पीरियड वाज, ओके, यहां से हम पढ़ते हैं, ये देखिए, यहां से ये इंपॉर्टेंट है. द चाइल्ड वॉज इनिशिएटेड on some auspicious day at the age of 5 years. This ritual was conducted by the family priest. The child was bathed, put on the new clothes and presented before the priest. The priest would spread in the new clothes with grain on it. The god and goddess were invoked and worshipped by the Vedic mantras. And the child finger was made to run on the grains, making letters of the alphabet. The priest was then fed and paid dakshina. He blessed the child and thus Gurukul education started, commenced. Okay, ये रिचुअल था. हायर एजुकेशन में क्या होता था? ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, गुरुकुल, द चिल्ड्रन वर एडमिटेड टू द गुरुकुल्स एट द एज ऑफ 8 to 12 years. आज तो एज इट इज ए डिफरेंट ना, हायर एजुकेशन. ऑन दैट टाइम 8 to 12 years. Brahman children were admitted at the age of 8. The Kshatriya children at the age of 10. Vaishya children at the age of 12 year. Upanayan sanskar of the child was performed at the time of admissions in Gurukul, thus commenced higher education system. ठीक है, ये आपने करिकुलम में ये लिखना है. फिर ये आ गया उसका नाम, ये द्वारा से एम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. Preservation and enhancement of a health, development of knowledge, acquaintance and observation of a social and national duties, preservation and development of culture, moral and character development, spiritual development. Or method of teaching क्या था? How the teachers, how the gurus, they give the lectures to the students. So they give the lectures by imitations and repetition, explanations and illustration method, through speech, demonstration and practice method, question answer method, discussions and debate method. Medium of instruction was Sanskrit. मॉनिटोरियल सिस्टम भी था वहां पे. ठीक है, और ये इसमें ये लिखा हुआ है. एजुकेशन सेंटर क्या थे? गुरुकुल थे, परिषद थे, सम्मेलन थे. राइट, तो ये खत्म हो गया हमारा बस वैदिक सिस्टम ऑफ. सिमिलरली ऐसे बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन से आपको लिखना है इफ द क्वेश्चन कम्स. ओके, बुद्धिस्ट सिस्टम में द मोस्ट इंपोर्टेंट है 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ. एवरीबॉडी शुड लर्न, everybody has to learn. If Buddhist system of education comes, so you should know about the 4 noble truth and 8-fold path in Buddhism. Okay, 4 noble truth and 8-fold path in Buddhism. ये 4 noble truth क्या थे? ये देखो. The first truth is the suffering. The second truth was the origin of suffering was our desires. Third is, how we have to get rid of these desires. And the fourth truth is the part to end of the suffering.
कैसे हम उस डिजायर से बाहर निकलें। तो ये चारों ट्रूथ आपको याद होने चाहिए। और एट फोल्ड पाथ, what was the eightfold path in the Buddhism system? Right view, right speech, right intention, right effort, right concentrations, right mindful, right actions, right livelihood. एक एक लाइन के, इट इज अ वेरी सिंपल। ओके, अब ये देखो एम्स ऑफ एजुकेशन, राइट? क्या था? फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, education of social behavior, preservation and development of human culture, character formation, characters पे बड़ा था ध्यान, राइट? वोकेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ये देखो फिर करिकुलम आ गया। करिकुलम मीन सिलेबस क्या था, को करिकुलर एक्टिविटीज क्या थी, वो सारा लिखना है आपने बुद्धिस्ट में। तो प्राइमरी एजुकेशन में एजुकेशन स्टार्टेड एट द एज ऑफ ए 6। तो स्टार्टिंग में ये देखो टॉट द 49 अल्फाबेट्स, देयर आफ्टर दे वर टॉट टू रीड एंड राइट द लैंग्वेज। 5 different sciences, namely morphology, math, masonry, medicine, logic, and spirituality were taught. Higher educations में क्या था? Started at the age of 12, same in the Vedic period. So during that period, a general knowledge of a grammar, religion, astrology, Ayurveda, philosophy was imparted to the student. Thereafter, the specialization in specific and field started. राइट? ये करिकुलम हो गया। और मेथड ऑफ टीचिंग क्या था? ये देखो, इमिटेशंस मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, explanations method, debate and logic method, lecture method, शास्त्रार्थ conference method, demonstration and practice method, self study method। बस खत्म हो गया। ये 3 चीजें लिखनी होती हैं आपको। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चंस, राइट ए डिटेल नोट ऑन द मैकॉले मिनट। तो मेनी टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड ऑन द मैकॉले मिनट। ओके, तो मैकॉले मिनट बेसिकली क्या था गाइस? ये देखो, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, who wrote his famous minute of a February 8 to 1835, in which he intensely criticized almost everything in Indian education. मैकॉले मिनट क्या था? What was the मैकॉले मिनट? मतलब on February 2, 1835 in the parliament, right? Lord Macaulay in front of the Governor General, right? Lord Bentinck. Okay, I think you know Lord Bentinck ही था नाम उनका, Lord Bentinck. He criticized the Indian education system. He criticized almost everything in the Indian education system. He criticized the astronomy. He criticized the culture, history, and philosophy. Even, do you know what he said in the Macaulay Minute? ये देखो, ये इसने क्या बोला, इसने ये देखिए, he said that in the parliament, in front of the Governor General Lord Bentinck, he said that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Right? So basically, he vanished our education system and he started the European education, everything into the in the year of 1835. So that was the Macaulay Minute. Right, guys? ओके, सो ये सारा का सारा मैकॉले मिनट्स है, तो आप ये लर्न कर लेना, कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, हम साइड बाय साइड वी ओपन द पेपर। ये देखो मैकॉले मिनट वी आर डिस्कस्ड, राइट? ये देखिए, ये हमने कर लिया लास्ट ईयर के पेपर में मैकॉले मिनट। नाउ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वी आर डिस्कसिंग, देन मेन रिकमेंडेशंस, ये भी इजी हैं। ओके, ये आप देखिए, salient feature of a Varda scheme of education. First of all, you should know that Varda scheme of education, it was started by the Gandhiji. It is also called the basic education, Naitalim education. Okay, तो इसमें basically what was important in this scheme, you have to learn ये रहा, the salient feature of the Varda scheme of education. The main aim of the Varda scheme of education was learning through activities. ये आपको लर्न करना है बस। व्हाट वाज द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन? नाइथलिंग, लर्निंग थ्रू वर्किंग, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, राइट? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। पॉइंट्स याद कर लो एक बार, यू हैव टू गो थ्रू दैट, देन लर्न द पॉइंट, और ऑन द कॉपी ना यू कैन राइट द पॉइंट आल्सो, ओनली द पॉइंट। दिस प्रैक्टिस यू हैव टू डू।
राइट, बिकॉज ना सारे पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड. ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वी हैव लर्नड इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, गांधी जी का ये वर्धा एजुकेशन सिस्टम में. तो हमें वी शुड नो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो वी कैन राइट इट, राइट. 7 years ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल द किड्स. ये देखो बुद्धिस्ट पीरियड में भी यही था, 7 years ऑफ एजुकेशन. पर्पस ऑफ पर्पसफुल एजुकेशन, एजुकेशन शुड बी पर्पसफुल. एजुकेशन फॉर द मासेस, देखो ये गांधी जी ने कहा था. गांधी जी वर्कड ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. Every person on this planet should get the education. That was the aim of Gandhi ji. Mother tongue to be the medium of instructions. ये गांधी जी ने कहा था कि if you don't teach in the mother tongue, ना student cannot understand completely that particular concept. Flexible curriculum and free environment, craft centered education. अब इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग क्या, इसका मॉडर्न मीनिंग क्या है गाइस? अब your thinking, your critical thinking powers should be so sharp. You should correlate that what was the craft centered education was, it was given by the Gandhi ji. So what was the implications in the modern education? Gandhi ji said that at least whatever you are teaching to the student, at least that education should be based on some skill, right? Because when after the 10th, after the +2, when the student moves out from the school, he should having some skill so that he could earn bread and butter, right? अपना लाइवलीहुड वो चला सके. एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, राइट. तो हमें ये चीजें गाइस वी हैव टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स. तो ये पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है, ये आप लर्न कर लेने आपने. नेक्स्ट है मेन रिकमेंडेशन कमीशन ऑफ 52-53. ये हमारा काफी टाइम हो गया था ये. इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं. इट वॉज गिवन बाय द डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडालियर, द वाइस चांसलर ऑफ द मद्रास यूनिवर्सिटी, राइट. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है? whenever secondary education comes in your mind, so guys it should be already cleared. Secondary education means 9th class, 10th class, senior secondary education +1 +2. तो naturally अब ये commissions है 1952-53 given by the Mudaliar. He talked about the secondary education, development of the secondary education, improvement of the secondary education, right? यही उसकी main recommendations होंगी, right? Main recommendations: development of a democratic citizenship, education for leadership, the concept of a world citizenship, development of personality. ये देखो, the secondary education must aim at development of the personality of the student, improvement of the vocational capability and efficiency. Vocational तो आपको मालूम है secondary में ही आएगी ना, when the student would go into the 9th 10th class. Diversification of the courses, right? स्ट्रेस ऑन द एग्रीकल्चर एजुकेशन, रूरल एरियाज, टेक्निकल एजुकेशन. ये देखो सेकेंडरी एजुकेशन में 9th 10th में ही टेक्निकल एजुकेशन आएगी, सो दैट व्हेन ही लीव्स द स्कूल ही वुड बी टेक्निकली साउंड, राइट. ये सारा का सारा ही टॉक्स अबाउट द सेकेंडरी एजुकेशन. ओके गाइस, लास्ट अब 6th है, एक्सप्लेन द नेशनल वैल्यूज एज इनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस along with their educational implications. But here in these questions, we have to talk about what was the, educational values in the, Indian constitutions. तो बड़ा easy questions है ये भी. तो ये देखो constitutional provisions लिखने हैं इसमें. basically आपको you have to learn free and compulsory, कुछ articles बस याद करने हैं इसमें. free and compulsory education article 45 says, religious instructions article 28 says, okay. लैंग्वेज सेफ गार्ड 29, 350, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है आर्टिकल 29, माइनॉरिटीज की बात करता है आर्टिकल 30, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस की बात करता है आर्टिकल 46, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 351. तो ये आर्टिकल्स हैं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं. ओके. 7th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन इट डेवलप्ड इन द स्कूल्स? सो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? International understanding implies mutual understanding, faith and respect among the various nations or countries of the world.
Okay, few important views on the concept of international understanding. राधा कृष्णन ने क्या बोला था? ये एक डेफिनेशन है, लर्न कर लो आप इसको, ठीक है? व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? ये है नीड, ये देखिए, नीड ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आता है तो इट शुड कम इन द माइंड, व्हाट इज द नीड? नीड क्या है? प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर्स। यूनेस्को कब फाउंड हुआ था? यूनेस्को आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942-43, right? Talked about the peace. UNESCO, it talked about the peace through the education, right guys? ये आपको पता होना चाहिए यूनेस्को क्या था, right? And न्यूपा और ये एजुकेशनल पॉलिसी, SSA सर्व शिक्षा अभियान, रमसा RMSA टॉक्स अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये सारा आपका थर्ड पेपर में एजुकेशनल स्टडीज का, जिसका टेस्ट है नेक्स्ट संडे। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव पेपर है। So what is the need of international understanding? Prevent world wars, maintain one's sovereignty, strengthening democratic principles, develop backward nations, develop network with other countries, promote human welfare. So it would be developed through international understandings. अब ways और means क्या है for developing the international understanding in schools? Aim, promotions of world citizenship, promotion of world peace. We should celebrate the World Peace Day. Promotion of independent and critical thinking, promotion of constructions rather than destructive feeling. हम ही ने डेवलप करनी है ना, हम ही का मतलब being as a teacher and principal. Redesigning the curriculum, instruction in various schools, literature, art, ये सारे के सारे global perspective के according होने चाहिए. Only then we can develop the international understanding. अब रोल ऑफ टीचर क्या है इन द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? ब्रॉड आउटलुक होना चाहिए। जिस टीचर का, ये टीचर खुद ही नैरो माइंडेड है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब देयर शुड बी ए पर्सनालिटी इन द टीचर। ओके, पर्सनालिटी मतलब ही शुड कम पंक्चुअल इन द क्लास, he should having a broad outlook. Okay, he should be master in his subject. Okay, every day he is learning in order to getting something. That's why he will give in the front of student. So guys, that's why it is called that learning is must. Revision एक याद आ गया मुझे, revision is called the grandmother of learning. Revision is called. Sometime now we leave our books now when we pass any of the class. So we have to revise that, guys. Being teacher, every day we have to put 1 hour on our development. Only then we can do the justice with the student. Trust me. अब ये देखो, ये जो लेक्चर्स है ना, सेम लेक्चर्स आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 20 years with the more or less कोई टॉपिक चेंज हो जाते हैं आफ्टर 2 years. ओके, सम टॉपिक चेंज, सम न्यू टॉपिक कम्स. ओके, मोर और लेस ऑलमोस्ट वही है, तो वो कंसेप्ट मेरा क्लियर है ऑलमोस्ट व्हाट इज टॉकिंग. बट फिर भी whenever I have to take the class, before one day I prepare your lessons with honesty and with everything, कि at least whatever I have got it, the same should be learned by the student, right? This is called the broad outlook. Okay, to understand man as a man. क्या बात है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ना? टू अंडरस्टैंड मैन एज ए मैन. आप ना ये देखो, ये पॉइंट्स आप भी डेवलप कर सकते हो. ओके, wedding out of an idea of a violence and war, emphasizing peace, cultivating right values, educating adult society, correct interpretations, use of effective method of teaching. तो ये रोल है टीचर का. स्टूडेंट ना टीचर को आइडियल मान लेते हैं, राइट? तो गाइज यू शुड हैव नॉलेज. अब क्या, डिस्कस द रोल ऑफ ए, लास्ट क्वेश्चन है ये, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर ब्रिंगिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन. राइट, तो ये आपकी बुक में से भी आप कर लेना, ये दिया हुआ है 280 to 285 पेज पे ना, बहुत बढ़िया. तो दैट्स व्हाई आई डिडंट राइट हियर ना, बिकॉज दैट वाज रिटन इन ए वेरी गुड वे. राइट, इक्वालिटी एंड इक्विटी की बात हुई है.
फिर उसके बाद ये एडिशनल नोट्स आ गए गाइस आपके, ठीक है। तो नाउ वी मूव टू द पेपर। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ये 7th भी हो गया, राइट, ये दोनों भी हो गए हैं, ये देखिए, राइट, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी हो गए हैं। तो ये एक दो हैं, सिंपल हैं, ये आप यू कैन डू बाय योरसेल्फ, राइट गाइस। So thank you so much guys for our exam preparation class. So almost we have discussed all our syllabus, last year paper. In spite of that, you have any problem, any doubt, okay, you can call me anytime. I will take once again your doubt session class of any of the 4 papers, right? But again, I will tell you, first I have, talked about it. Now learn and do practice. Okay, guys. Thank you so much, guys, for this class. Thank you.